Grouping of plants. Plants can be grouped on the basis of their different parts. Let us see 4 different ways in which plants can be grouped. Grouping by stem. Plants are grouped based on the size, strength and nature of their stem. प्लांट्स को उनके स्टेम की साइज, स्ट्रेंथ एंड नेचर के आधार पर ग्रुप किया जाता है. ग्रुपिंग बाय लीफ. प्लांट्स आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ वेन्स इन देयर लीव्स. प्लांट्स को पत्तियों में वेन्स के पैटर्न के आधार पर ग्रुप किया जाता है. ग्रुपिंग बाय रूट्स. प्लांट्स आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रूट दे हैव. प्लांट्स को उनके रूट्स के टाइप्स के बेसिस पर ग्रुप किया जाता है. Grouping by seeds. Plants are grouped by the number of seed leaves, that is cotyledons in their seeds. Plants को seeds में मौजूद cotyledons के नंबर के आधार पर ग्रुप किया जाता है.